global geopolitics in South Asia. Now, everybody is aware that the world has changed, and it has changed because of the rise of China. The rise of China has done four things to the global geopolitics. The first thing is that the geopolitics, until the rise of China, which used to happen in transatlantic area, it was limited to America, limited to the Western European theater. Now it has come to our region, Asia Pacific. This is important. I'll explain why it is important. The second is, today the world is multipolar. The third is, in the multipolar world today, there are three great powers. And the fourth is, there are two governing systems today in the world. Very briefly, I'll touch on all these four because there's a lot of area to be covered. Now, when we say a multipolar world, what we are saying is that there are 193 countries under the United Nations, big and small. Now, it must be the aspiration of all the 193 countries to be respected by the others and ideally to have their own foreign policy without pressure or intimidation from outside powers. That is a multipolar world. Now, in this multipolar world, we have three great powers. By definition, a great power is a country which has the capability to influence events anywhere in the world. And if you take this as a definition, there are only three countries which qualify, and they are America, China, and Russia. So we have a multipolar world, we have three great powers, and now what has happened is that the geopolitics has come to our region. This is absolutely critical. What means is that until now, until this happened, and this year, generally all the experts in the world believe happened in 2017 during the first Trump administration. The rise of China was acknowledged by America. What this means is that if this is where everything has to happen, that means all the three great powers will now be focused in this region. Which means that South Asia and India, which used to be the fringe of the global geopolitics. What fringe means is that we used to make our foreign policy based on three factors earlier. The three factors were geography, history, and national power. When we talk of national power, we are talking of three things basically. And they are economy, military power, and technology. And technology guides the other two. So it is the foundation for both the economic power as well as the military power. Now we have to add another factor, which is global geopolitics that has come in. बहुत सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है, हम आज वहाँ बैठे हैं जहाँ the entire world is focused here, and especially the three great powers. So we have an opportunity today where all the three great powers need India. And see, all this happened when Prime Minister Modi came to power in May of 2014. As I said, the world changed in 2017. So ये एक opportunity हमारे पास आई थी और हमने उसको avail किया है, नहीं किया है, that is the question which I'll answer in a while. And the fourth thing I said is that there are two governing systems. Now what that means is, this is unprecedented, कभी नहीं हुआ ये. There is one system which is the extension or the follow-on of the Cold War, which is led by America. And that system is about military power. It is about a zero-sum game. That means if I win, then you have to lose. That's a zero-sum game. It is about balance of power politics. And that is what the colonist led by America. That means I'm now talking of what is called the global North nations, which is America and the industrialized West, which is 20% of the world population. They follow this model. एक और model है, a new model that has come up, and that came because of China, the rise of China. उस मॉडल में चाइना और रशिया भी शामिल है, because Xi Jinping and President Putin, they are completely aligned in their vision. They have a lot of differences, that is besides the point, but as far as the new world order is concerned, they are completely aligned, and
This order is about development. This order is about Belt and Road Initiative. And Belt and Road Initiative is where today 151 countries out of 193 in the world are on board. So वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, what do they need? They need respect, they need development. वो सब इधर जा रहे हैं. So 80% of the world actually is gravitating towards the model which is supported by two great powers, China and Russia. So ये है ओवरऑल एक जो इस समय सिचुएशन है. अच्छा, अभी क्या है कि द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड, इंडिया डिसाइडेड that look, we want to be with the Americans and the global North nations. ये एक colonial mindset है about a zero sum game कि हम जीतेंगे वो तो दूसरे को हारना है. I forgot to mention this. On the other side, their model is of win-win. Win-win का मतलब क्या है? And this actually comes from the Chinese philosopher Confucius, which basically means it's about harmony. If I talk of, let's say, the human body, the brain has a role, definitive role, heart has a definitive role, lungs का अलग काम है, but they all have to work together for the body to function. That is harmony. That means in the universe, there are different countries, big and small, they all have a place, they all need respect, so there is a possibility of win-win through cooperation. हो सकती है. And this is what Putin also agrees with. So हमने ये तय किया है that we need to be close to the Americans. So although we are a global South nation, because we are a developing country, but we want to be identified with the global North, like the Prime Minister now is going to the G7. On the other hand, जो 80% world है, as I said, they are with these people. अब देखिए क्या हुआ. Very interesting thing. Starting from Obama, and especially, as I said, the world changed in 2017. All the American administrations, until the Biden administration, that means until the 20th of January 2025, till Trump became the president, the thinking was that इस area में, because this is where the contestation has to happen, and the strength of the Americans is their military power, we should have a security competition with China. This is the American thinking because this is their strength. For example, in the Western Pacific itself, something like 330 US military bases surround China today. Now let's see this region that I am talking about, very interesting region. इसकी एक साइड पे you have ASEAN in the east. Now what have the Chinese done? Americans created ASEAN. Chinese in 2001 offered them the FTA, free trade agreement. अब वो उसको बढ़ा रहे हैं. They are coming up with a new free trade agreement which includes artificial intelligence, the fourth industrial revolution, technologies. I'm sorry I'm going a little fast because a lot of area has to be covered. Quite happy to take the questions after that. So एक साइड पर तो ये है. So basically what they have done, the Chinese have done is that आज एक situation है जहां ASEAN nation, 10 member nation, they do not want war. They do not want to be identified close to America. They want prosperity. They want to stay neutral. जो allies भी हैं अमेरिका के, like Japan and South Korea, they've also done a triangular economic cooperation with China. Why China? Because China today is an economic superpower. China today does 31% of the world manufacturing. China today is the hub of global supply chains. सब कुछ वहीं बनता है. So एक साइड पे तो चाइनीज ने ये आसियान में कर दिया. When you look at Asia Pacific, दूसरी तरफ देखिए, at the other extreme is Africa. Africa is a continent of 54 nations. As I talk to you, 52 nations right now are in Henan province of Africa with Xi Jinping discussing about how to take the economic projects forward. So there is a total sway of America, and the Russians and the colonists have been thrown out from Africa. अमेरिका को निकाल दिया, फ्रांस को निकाल दिया, सबको निकाल दिया.
कहने का मतलब ये है, एट द टू एक्सट्रीम्स, व्हेन यू लुक एट द थ्री ग्रेट पावर्स, ऑल थ्री ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्व्ड। आसियान में भी इन्वॉल्व है, वो मिलिट्री अपना कर रहे हैं, और यहाँ अफ्रीका में भी है। बीच में हम बैठे हैं साउथ एशिया। यहाँ क्या हो रहा है? तो हो ये रहा था, अंटिल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हियर, इंडिया को ऑफर किया गया था कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाइए एज अ मिलिट्री बुलवार्क अगेंस्ट चाइना in the Indian Ocean region. Why in the Indian Ocean region? Because annual trade China ka, which comes from, let's say, the Gulf or the Gulf of Eden, वो जो पूरा आता है यूरोप से आता है ट्रेड, $3 trillion का, it passes through Indian Ocean, it passes through the Western Pacific. So this is their vulnerability. ट्रेड है उनका, तो इंडिया को रोल दिया गया and India happily took it. We have signed all the military agreements of America, और हम उनका अब नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं. Once we were very happy till the end of the Biden administration that now we are a military bulwark against China and we get a lot of respect from the Americans. Not only that, the Americans also were supporting us as the biggest country in South Asia until the Biden administration was there. तो इसमें हम बहुत खुश थे. सो एक नैरेटिव चला हमारे यहाँ, स्टार्टेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट वी आर ऑल्सो इन अ रीजनल कॉम्पिटिशन विद चाइना. हमारी जो आज जीडीपी है वो 3.9 ट्रिलियन है, विच इज बेसिकली सर्विस बेस्ड. चाइना की 19 ट्रिलियन है, which is complete manufacturing based, and it is going to the next step of manufacturing, which is what they call the new productive forces. वो एक अलग चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर है, चलेगी वो. तो कहने का मतलब ये है कि एक हमने ये सोच बनाई कि अगर अमेरिका इज इन अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन विद चाइना, वी शुड ऑल्सो बी इन अ रीजनल कॉम्पिटिशन विद चाइना. और दोनों देशों की प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ कॉलोनिस्ट माइंड सेट, that we are not happy with the rise of China. कि एक मुल्क सक्सेसफुल हो गया है, हमको उससे दिक्कत है, बिकॉज ये एक जीरो सम मेंटालिटी है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट द होल थिंग. यू सी दैट एज फार एज द चाइनीज आर कंसर्न्ड, एज फार एज द अमेरिकन्स आर कंसर्न्ड, दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू compete विद चाइना. हम नहीं कर सकते हैं compete. क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, नेशनल पार्क की 3 होती हैं चीज़ें हार्ड पार्क की. उन तीनों चीज़ों में हम चाइना के आसपास भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी नहीं है, इकोनॉमिक पावर में भी नहीं है, मिलिट्री पावर में भी नहीं है. तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही था कि हम उनसे बात ही ना करें. वो हमें मौका मिल गया, जो गलवान हुआ वहाँ हमें मौका मिल गया, दैट वी शुड नॉट हैव नॉर्मल रिलेशन विद चाइना. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप आस्किंग मी, अब क्या होगा, नॉर्मल होगा नहीं होगा? कुछ नॉर्मल नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते नहीं हैं. बिकॉज अगर नॉर्मल हो गया तो दिक्कत क्या है? देन देयर विल बी कोऑपरेशन. चाइनीज ऑलरेडी अप्रोच्ड अस एंड दे सेड दैट वी एज 2 big countries we should work together for the betterment of the small countries in South Asia. And they gave a formula also to Prime Minister Modi, and the formula is China India plus. Plus means a small nation. That let China and India work together, let's say for the connectivity, for the development of Sri Lanka, for the development of Maldives, for Nepal. वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी डीप पॉकेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काबिलियत है, तो वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे. तो बेस्ट है कि आप उससे बात ना करिए. अभी क्या हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बदल दी है. ट्रंप फॉरेन पॉलिसी इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, which basically means that he wants to build the national power of America in very simple terms. He wants to get the manufacturing back, which in any case is outdated, but that is besides the point. And as far as the Western Pacific is concerned, a realization has come in the US military that the relative power of US military vis-a-vis the People's Liberation Army has declined, which is the truth. So that needs to be built up. Recently, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, पीट हेक्सेट, he was there. He went to Philippines. Now there are 2 hotspots there in West Pacific.
which is the Taiwan and the South China Sea. तो he is gone there. Now we are feeling lost. हम लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं कि क्या क्वाड को अहमियत मिलेगी नहीं मिलेगी? आर वी स्टिल द सिक्योरिटी प्रोवाइडर और नॉट फॉर द इंडियन ओशन रीजन? दैट क्लैरिटी इज नॉट कमिंग. हमने क्या कर दिया है इन द मीन टाइम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 2014 में सार्क का समिट हुआ था नेपाल में, काठमांडू में. सो सार्क के अंदर देयर आर 3 member countries, which is Nepal, Sri Lanka and Pakistan. They proposed that China, which had an observer status, उसको full member बना दिया जाए. India opposed that, क्योंकि consensus से चलता है, तो बात रफा दफा हो गई. But 2016 में फिर उरी अटैक हुआ. 2016 के अंदर जो समिट थी वो इस्लामाबाद में होनी थी, तो हमने उसको छोड़ दिया. Basically, India moved out of SAARC in 2016. And then we decided that we have to move into BIMSTEC. हमने वहाँ फोकस किया BIMSTEC में. हमने क्या किया, 2 जो मुल्क थे SAARC के, पाकिस्तान, मालदीव्स, उसको हटा के BIMSTEC के अंदर यू ब्रिंग इन थाईलैंड एंड यू ब्रिंग इन म्यांमार. यहाँ हमने फोकस रख दिया. Then the External Affairs Minister justified that, explained to us that why it is important to फोकस ऑन बिम्स्टेक. वो इसलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो एज फार एज द लैंड बॉर्डर्स आर कंसर्न, पाकिस्तान एक तरफ है, चीन एक तरफ है, वहाँ हम कुछ खास कर नहीं सकते. अगर हमको प्रोजेक्ट करना है कि हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक रीच है कहीं पर. तो वो सिर्फ ओशन में हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द अमेरिकन्स. तो हमने क्या किया, बिम्स्टेक को, देन वी सेड नाउ इट इज अलाइंड विद आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एंड देन जयशंकर रिपीटेडली टोल्ड अस आल्सो दैट दिस इज आल्सो अलाइंड विद द अमेरिकन इंडो यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी. मतलब हम पूरे अलाइन हो गए हैं. तो बेसिकली राइडिंग ऑन द अमेरिकन्स, वी वांट टू प्रोजेक्ट दैट वी आर इन अ कॉम्पिटिशन विद दैट. कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हमने सार्क को और साउथ एशिया को स्ट्रेटेजिकली छोड़ दिया 2016 में. अब जब आप कोई जगह छोड़ देते हैं, कोई और आके भर लेगा उसको. अब चाइनीज ने क्या किया था, उनकी बेल्ट एंड रोड पर, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड भूटान, सब कंट्रीज ने उसको ज्वाइन किया हुआ है बेल्ट एंड रोड को. तो उनकी शैडो तो ऑलरेडी वहाँ आ गई थी. तो अभी देखिए आप ओवरऑल सिचुएशन क्या है. ओवरऑल सिचुएशन ये दिखती है फिलहाल कि हमने साउथ एशिया को छोड़ दिया. इनफैक्ट अभी जो हमारा ये पार्लियामेंट ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, वो नेबरहुड में कहीं नहीं गया था. तो हमें कोई खास दिलचस्पी है नहीं नेबरहुड में, उसको हम में कोई दिलचस्पी है नहीं. हम इसको छोड़ चुके हैं बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग एट अ स्ट्रेटेजिक रीच विच गोज टू द बेसिकली द ईस्ट and then it goes to the Middle East, what we call West Asia. हम यहाँ देख रहे हैं अपने. देखिए, ये एक बेसिक रूल होता है मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, यू नेवर वेंचर आउट बिफोर इंश्योरिंग दैट योर होम बेस इज सिक्योर. हमने अपनी होम बेस को खाली छोड़ दिया, वहाँ पे चीन की शैडो आ गई. तो अब मैं यहाँ पे इसको, इतनी बात को यहाँ पॉज करता हूँ.